Welcome to the launch of the Saavn campaign in India, if I must say. That's right. It's something which I used to use before I got to know Param, Vin, and Rishi. It was strange that me and my mother at the same time, 2 years back, were hearing music on Saavn. And a couple of months later, Param reached out to me and asked me if I want to partner in the company. Small but big enough for me. And today here we are launching Saavn to the Indian audiences, and I hope that we can reach out to you guys so that all of you guys become users and have a great time listening to music on Saavn. Thank you, Ranveer. It's truly our pleasure to bring you on board as our partner, and really we've already been taking a lot of your advice and everything that you've been saying to help influence the direction of the company, and it's been absolutely, thank you. It's been absolutely an incredible experience so far, although it's been early. Wanted to just take this moment to talk about a few little things about how you, first a little bit about yourself and then about Saavn. One of the first times that we got to spend some time together, I noticed all this in public, so many people just coming to you, and every single person that came up to you, they wanted to take a picture, they wanted an autograph, and with a smile, you were always so genuinely, making yourself available and being so kind to your fans. This humility, I mean, where does it come from? I mean, it's very unlike... Should be humble, and especially somebody like you, a young talent who's starting such a visionary thing like Saavn, giving a platform to Indian music artists, Hindi music, letting the consumer use something which is so friendly and innovative. So I think humility has nothing to do, has nothing to do with it. It's just the way I am, it's the way you are. But thank you so much for all the No, of course. It's something that really stands out, Ranveer, in everything that that we've seen. So the other thing I wanted to just mention before we go a little bit deeper into Saavn-specific questions was, we've had the pleasure of spending some time together in New York. New York is where we founded the company, and clearly New York has a special place in your mind as well, and wanted to just understand where that came from. Well, besides Saavn working through New York, I mean, that's a big enough connect. I remember I had just finished school and my father was directing a movie called Aab Lord Chale, and that's the first time I experienced New York. We shot there for 80 days. Post that, when I finished my school year, I did my further education in New York and had a certain connect with the place. It's very similar to Mumbai, with the kind of different cultures coming in. It's vibrant, it's fun, there's a lot of independence, there is a freedom, to that city. So I guess, sorry? Yeah. I think we're good. No, that's great. Let's talk about first, just everyone wants to know, what are some of your favorite artists? I'm a big fan of his music, and really, it's been great that I had the opportunity
and that's really been a great experience. The famous Yo-Yo Honey Singh, Mika Singh, going back to Kishore Kumar, Mohammad Rafi, Lata Mangeshkar, American bands like Imagine Dragon, Mumford and Sons. So I'm a big fan of music. I think also India is so rooted in music. Music is part of our culture. So music plays a big important part in my life. No, that's great, and even when we see you on the big screen, you dance so well. Does that dancing come naturally to you? Do you listen to Saavn when you dance to music? Well, of course, Saavn is on all the time, but I think what you see on screen is an amalgamation of a lot of people's efforts, a lot of rehearsals, a lot of takes. When you're doing a theatre play, then I guess your true talent comes out, or a live stage show. But what you see on screen, I think it requires a lot of hard work to actually portray what you finally see. Well, it looks pretty natural. Just let's talk a little bit more about Saavn specifically. First, where did you discover the application? Good, we have mics now. Yeah, I think that's better. So the question was, where did you first actually discover the application? Well, I think I chanced upon Saavn, searching for some applications, and I realized how user-friendly it was. It was personalized. You could make your own playlist. You could listen to songs on the go, great quality music. And like I mentioned earlier, coincidentally, even my mom and my dad were listening to music on Saavn. So it started off there, and when the opportunity rose where, you contacted me, I thought it would be a great opportunity for me, to invest myself and my time on something that I truly believe in and I truly use. No, that's great. How do you use it generally in your daily life? I think like all of us living in a city like Mumbai, we spend most of our lives in the car, because of the traffic. So we listen to a lot of music. As an actor, I think it's very important. Music plays a very important part, to inspire you, to get yourself, towards an emotion of the scene, if it's dramatic, if it's emotional, if it's romantic. So music has always played an important part in my life. Well, Saavn is quite fitting because we're the only app that has all the music available in the market, so that's great. Just another follow-up question there. I mean, this is not like a typical brand ambassadorship, and things that you generally, endorse, right? This partnership is different, and would love to, hear from you. Not like, I'm just a brand ambassador and you're using me for a couple of days. You actually offered me to be a part owner in the company. Big or small, it's big enough for me. So yeah, how much ever I can involve myself in marketing of Saavn, in trying to reach out to as many new users, to give them a platform where they can, enjoy the music, where they can feel a personal connect to the application, make their own playlist, share their playlists. I think Saavn can also be a great platform, for new music artists, somebody from Patna or Delhi or Chandigarh or Mumbai, uploading their music, uploading their video. And so I think, we have many things in plan. Yep. So hopefully, we'll be able to achieve that step by step. No, that's great. And that's really what we've been working on and what we've been excited to hear about. And we have a lot more to unveil for everybody in the months and, years ahead. And just would like to... Like I said, it's a very user-friendly application. So I guess just by, garnering as many users as we can, I think it's a great platform for many things. What Pandora and Spotify has done for the West, I think Saavn has it all, to achieve that, where Hindi music is concerned. Soon we'll be opening to videos. I think that'll be an exciting step. So lots in store, I guess. That's great, Ranveer. Really, thank you very much for taking the time and speaking so openly. मैंने आपका सवाल सुना नहीं आप बोलो किसी ने can you repeat किसी ने सर वही स्टंट दोहराया है. Well, I think any form of art is असर डालता है. But I think हर फिल्म के पहले, हर टीवी शो के पहले हम अक्सर कहते हैं कि it's been performed by professionals, please don't try this at home. ये हम
सुनते आ रहे सुपरमैन के दौर से, कोई अगर सुपरमैन का बड़ा फ़ैन है तो वो लाल कपड़ा पहन के बिल्डिंग से जंप मार के सोचने लगता है कि मैं भी सुपरमैन बन सकता हूँ. बट इट्स एंटरटेनमेंट. मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं. इट्स अनफॉर्चुनेट. आई थिंक हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम पर्दे पर दिखाते हैं उसके पीछे बहुत सारे पैंतरे होते हैं, बहुत सारे तरकीबें होते हैं, and there's a lot of harnesses, lot of precautions that are taken. And जो आप पर्दे पर जो हीरो देखते हो वो असल लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं होते. So just don't, what you see on the screen, don't try that at home. It's going to be amazing. Firstly, I think it's a great step towards avoiding piracy of music. I think it's extremely user friendly. Anybody who has a 3G network or has Wi-Fi can access Saavn. It has great quality music. It has a great selection. It has everything that you want to hear where the Indian language is concerned. So yes, Rockstar was a big step in my life, in my career. And that was a musical film. So hopefully with this musical application, it'll be the second step of my life. Hoping for that. हाय रणबीर, आपके राइट में. लेते रहता है यार. क्या है कि आप सब जानते हैं कि हम एक्टर्स गाते नहीं, हमारे पीछे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, हम उनका श्रेय लेकर बड़े स्टार बन जाते हैं. बट क्योंकि तूने इतने प्यार से पूछा है तो मैं गाने की कोशिश करूंगा. किसका गीत बोल रहा था? रहमान साहब, किशोर कुमार, रहमान सर बहुत ऊंचा गाते हैं, तो मैं टच नहीं कर पाऊंगा. जो रॉक स्टार में आपके ऊपर फिल्माया गया, अगर आप वो ओनादा परिंदे. रॉक स्टार में तो गाने बहुत मुश्किल थे, लेकिन मैं अपना सबसे फेवरेट गाना गाना चाहूँगा जो है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था मैंने ये पहले भी कहा है कि मम्मी पापा ने मुझे एक सिंगिंग क्लास में डाला था, और जो हमारे टीचर थे उन्होंने पहली क्लास के बाद मम्मी पापा से कहा कि मैं इसे सिखा नहीं सकता क्योंकि भगवान ने ना इसे सुर दिया है ना ताल दिया है. तो मैं प्री वार्निंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा. पर हम बैकग्राउंड कोरस देगा या कुछ बीट देगा. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार. अब देखो मैं कैसे सुर के साथ खेलता हूँ. जीना इसी का नाम है. सॉरी अबाउट दैट. एंड दूसरा सवाल परम से. परम, किस तरीके से गानों को सुनता है? किस तरह सावन कमाता है? Revenue model. Revenue. What's your revenue? So generally, the way that Saavn makes money is in three different ways. First, through advertising revenue. So we work with all the major brands and agencies and have developed a unique advertising technology to be able to give audio ads, just like you're listening to radio, within the stream of music. Secondly, we work with Apple iStore and the Google Play Store, and now with all the mobile operators, where you can subscribe to Saavn. When you subscribe to Saavn, all your music can be downloaded, no ads. You can listen to high fidelity audio, and it's a much better experience, and things that we're evolving there. And the last is that we're working with the mobile operators today to be able to provide free data for streaming music, so that data you should never worry about your data costs for streaming music, and we're working with the mobile operators to do that as well. जो ये कहना चाह रहा है कि हाँ ये कमाते हैं. Hi Ranveer. Know about this, the chief of censor board? Yeah, Mr. Rakesh Kumar has been arrested on charges of bribery. On charges of? So I was wondering. Well, if he's corrupt, he should be arrested. That's all I have to say. I am not here to defend him or to, be for him. But if he's been proven guilty in the court of law, and if he's done something, then he deserves to be punished. Hi Ranveer, here. वो बोलने के बाद मैं सोचने लगा शॉर्ट फिल्म तो बहुत शॉर्ट होगा, उनके लाइफ के बारे में कुछ बताने के लिए, तो मुझे 500 घंटे लगेंगे. बट अगर मैं सोचने लगा अगर मुझे शॉर्ट फिल्म बनाना है तो मैं किसके ऊपर बनाना चाहूँगा. तो फिर मैंने सोचा कि मैं शायद मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान और मिस्टर सलमान खान को सिर्फ एक सोफे में बैठा के एक 8 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, सिर्फ वो उनसे बात कर रहे हैं. क्योंकि आई थिंक द काइंड ऑफ सक्सेस, द काइंड ऑफ फैंस, द काइंड ऑफ वर्क दैट दे हैव डन, just to see them together, I think will be something which generations and generations will cherish. तो अगर मुझे मौका मिले शॉर्ट फिल्म बनाने का तो मैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म बनाना चाहूँगा.
सावन आपके लिए क्या है, अगर 2 वर्ड में डिफाइन करना चाहें? सावन आपकी feelings सबसे को। पहले सावन मेरे लिए एक म्यूजिक एप्लीकेशन है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। सावन मेरे लिए बारिश है, जो जब बारिश होती है, इसलिए आई थिंक द वर्ड सावन एंड टू यूज़ दैट विद द म्यूजिकल एप्लीकेशन इज रियली नाइस, क्योंकि इट हैज़ अ नाइस रिंग टू इट, यू नो। सावन, it's a word that makes us happy, it's very positive. But what I myself don't know is, Param, what is the reason behind this logo? Why this logo? It looks like an alien, it's green. इसके पीछे मतलब क्या thought क्या थी? Multiple meanings behind the logo. First, you know, Saavn, although we don't talk about it much, is South Asian Audiovisual Network, right? And the logo itself, it's kind of like one source for many points of distribution. So if you go onto your computer, you make a playlist on Saavn, you can access it on your mobile, the same playlist, and it's a ubiquitous experience. So that's generally the feeling. The other thing here is that we're going green, you know, because we're, you know, being conscious of our carbon footprint and being environmentally friendly, going from physical music to digital music. So that's why we chose the color green for the logo. रणबीर, अभी हमने सुना कि आप हम सबके गाने बहुत बड़े हिट हो गए। मैंने एक गाना गाया था, आलोक भी जानता है, एक गाना था फटाफटी बर्फी में। कोई जानता नहीं है इसके बारे में, जो अच्छी बात है, एक सीक्रेट रहा है। बट मैंने कोशिश की, ट्राई किया मैंने, बट इट वाजंट सक्सेसफुल, सो दैट्स व्हाई आई गेस यू गाइस डोंट नो अबाउट इट। रणबीर, वो आप वो पूछो ही कैटरीना नहीं। के बारे में नहीं पूछ रही रहने दो, रणबीर, छोड़ नहीं दो। पूछ रही कैटरीना के बारे लेट्स में, टॉक मैं अबाउट नहीं पूछ सावन, लेट्स ऑल बी हैप्पी, लेट्स ऑल बिल्कुल, हैव अ गुड टाइम। सावन से रिलेटेड है। रणबीर की शादी कब होगी? क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में सबसे आपने पहले कहा तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सावन के टाइम शादी नहीं होती, क्योंकि फिर सब भीग जाते हैं, सावन तो मतलब बारात तो हरियाली। सब भीग जाएगी। अच्छा, तो अच्छा, एक्चुअली प्यार, शादी प्यार, हनी, तो जो मौसम है आपने गलत कहा, वो हम एक्चुअली विंटर में, दिसंबर जनवरी में यूजुअली शादियाँ होती है। इसलिए इसकी मेरे पीछे इसका थियरी है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बहुत सारी शादियाँ होती है, इसलिए सारे बच्चे सितंबर में बॉर्न होते हैं, क्योंकि दिसंबर से 9 महीना सितंबर होता है। तो ये मेरा थियरी है इसके पीछे। बट जहाँ शादी का सवाल है, मैं फ़िलहाल तो शादी के बारे में सोच नहीं रहा। अभी तो मैंने अपने फिल्मों के साथ शादी कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब शादी की बात निकलेगी यू नो मेरे जहन में, तो मैं बिल्कुल इसके बारे में बात करूँगा। बट फ़िलहाल कोई शादी नहीं हो रही, ना ये सावन ना अगले सावन। Saavn is available in every country in the world. We actually have people visiting our service from over 200 countries every single month. There's been tremendous growth wherever there's South Asian audiences and Indian audiences around the world. So places like the United States, Canada, UK, US. पीजी भी बहुत आता है, अलग अलग शूट करके फिर एक साथ में कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि आपकी भी इच्छा होगी कि आपको अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी होगी। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे मेरी भी इच्छा है। मेरी कोई इच्छा नहीं है सर। तो मेरी ऐसी इच्छा है, देखते हैं अगर होगी, अगर मैं एक अपने सपने को साकार कर पाऊंगा या नहीं। जी, ओके, मेरा एक सवाल और था कि तमाशा का नेक्स्ट देखो, ये भी आपने अपने माइंड में बना के आपने छाप दिया है। तमाशा का शेड्यूल अभी नहीं, 6 महीने बाद होने वाला है। तो मैं कल क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, आप 6 महीने के बाद आप क्या पूछ रहे हो, तो ये सब गलत है। ऐसी बात पे कोई सच्चाई नहीं है। अभी जो हम पिछले महीने हमने तमाशा शूट किया था 20 दिन के लिए, अभी मैं जगह जाशो शुरू करने वाला हूँ और तमाशा हम जनवरी या फरवरी में शुरू करेंगे। मैं सबको रिमाइंड करना चाहूंगी ये सावन का I think Saavn is a wonderful platform. You know, you always have to push yourself, you know, to have different innovative marketing exercises. And I think I'm going to use Saavn myself, you know, to launch the music of my movies. I've started a production now, Jaga Jasoos, which should release sometime mid next year. So I'm definitely going to launch the songs on Saavn. It's a musical. We're going to have some 22 songs in it. So I think there's a lot of work that, you know, Saavn and me can do together on that. Hi, Ranveer. सबसे पहले तो मैं एक यूज़र था, you know, before knowing that, you know, meeting Param, Rishi and Vin, I was a user myself, and I think अगर आप एक जो एक चीज़ है अगर आप यूज़ करते हो, अगर आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है उसके साथ, you identify with it, then I think you should be a part of it. And I think the opportunity जब आई थी, जब परम मुझसे मिलने आया, तो मैं बहुत खुश हुआ कि you know मुझे एक पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं, but I'm part of the company, I'm a part owner of the company. So I lap to it and I have great faith in it. The amount of passion and vision that Vin, Param and Rishi have, just to be part of that vision, I think is really a very big thing for me. Ranveer, if you could speak about it. Well, I think, you know,
apart from all the press conferences and the commercials that you see, I think Param has always made me part of all the decisions in Saavn. You know, if it's the marketing decision, if it's changing the outlook of what Saavn looks on your phone or on the computer, if he has a new idea, they've always taken my advice, whatever I can advise. So yeah, I think just trying to engage a larger amount of the newer generation who are music lovers, whatever I can, give my 2 bits on it, how to attract them, how to get them on board, how to make them use Saavn. I think that's something which we all are sitting and working on. रणवीर हाय ईशान फ्रॉम या जान नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेरा मानना है कि मैं एक एक्टर हूँ, जब मेरी फिल्म बाहर आती है तो मुझे मौका मिलता है कि मैं आप सबसे बात करूँ, चीज़ें होते बात करने के बारे में, जैसे मेरे फिल्म के बारे में, मेरे किरदार के बारे में, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में. अगर साल भर अगर मैं कहता जाऊँ नहीं ये गलत है ये सही है, तो उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है. मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने काम के बारे में बात करूँ, अपने फिल्मों के बारे में बात करूँ. जी, आप बिल्कुल सही है ना. मेरे पास एक पब्लिसिस्ट है जहाँ आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सके कि ये सही या गलत है. पर ठीक है, बहुत मेरी पूरी ज़िंदगी बची है, एक लंबा करियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी नहीं तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही तभी मैं क्लैरिफाई कर लूँगा. लेकिन अगर ऐसा कुछ सवाल निकलता है, मुझे भी बुरा लगता है कि आप इसके बारे में लिख रहे हो या उसके बारे में लिख रहे हो, मेरे माता पिता के बारे में लिख रहे हो, मेरे काम के बारे में लिख रहे हो. और क्या होता है कि अक्सर एक जजमेंट बन जाता है आपके बारे में. जब हमारी ऑडियंस जब पढ़ती है वो आपको बिलीव करती है कि ये अगर मीडिया कह रही है तो ये सच्ची होगा. बट मैं कितना आके बोलूँगा नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है. तो आई ट्राई एंड स्पीक ओनली व्हेन आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट. और उसके ज़रिए अगर आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर सकता हूँ. तो रणवीर अगर आप क्लैरिफाई कर दें इस बात पे कि सच्चाई बात हुई थी बिल्कुल शादी होने नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है. मैं लंदन बहुत बार गया हूँ. मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कटरीना को बहुत पहले से जानता हूँ. मैं उनकी मॉम से भी बहुत पहले मिल चुका हूँ अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पे. तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें होते हैं. तो आई गेस ये गलत खबर है. दैट्स ऑल आई कैन से. सॉरी एक्चुअली अयान इज स्टिल राइटिंग इट. वो कुछ इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट. हम वो अगले साल अगस्त में शुरू करने वाले हैं. But Karan, the producer of the film, wanted to launch the star cast because Ayan had a story in mind, but जो screenplay वो बना रहा है वो अभी तक ready नहीं है. वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है and hopefully by next August when we're about to start the film, I can talk about it. रणबीर, हमेशा देखा गया कि आपकी पूरा सवाल सुना नहीं, लेकिन मुझे broadly एक आइडिया मिल गया. Each to its own. हर इंसान अलग होता है. जो बेबो समझती है या लोलो समझती है या जो मेरे पिता या माता समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वो समझता हूँ. ये मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ, जिस तरह जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, जो नहीं कहना चाहता, वो मुझे आज़ादी है. जैसे राजनीति में एक बहुत कमाल का डायलॉग था जो मैं आप पे मारना चाहूँगा कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन वो आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती. तो मैं यही कहना चाहूँगा. सो या थैंक यू सो मच. We'll be right back.